Hello, everyone. This is Drama Log. We're back with another new episode. Today, we are focusing on episode 12 and 13 of Dunyapur. With me, I have Sana from Drama Log, and I also have Faraz from Drama Pakistani. Hi, team. How are you all? Excited? Yes, Hi excited, I everyone. guess. Yeah. It's end of the week, तो वो जो हम एक phrase कहते हैं ना, thank God it's Friday. तो Yes. thank God it's And Friday. in US, we are starting our winter vacation. So, Next. yeah, Christmas is right around the corner. So, lots of excitement in the air. It's आप one of लोग the छुट्टी वगैरह करेंगे कि अगले हफ्ते मतलब कोई plans हैं आप लोगों के? I'm not taking time off per se, but there's hardly anything going on at work. Nobody's around. So I'll take time off in the first week of January. I'm off और next week. डॉक्टर साहबा I'm से off सुना from tomorrow till 30th. है? Okay. मैंने भी छुट्टी कर ली है. अगले हफ्ते मैं छुट्टी करूंगा तो छुट्टी से मुराद मेरा ये है कि मैं हर चीज से छुट्टी करूंगा. Next Friday तक. Yeah, are you planning a trip? नहीं, no trip. बस just थोड़ा relax बच्चों के साथ वक्त गुजारना है थोड़ा. Movie Yeah, nights I have बच्चों के साथ. we were supposed to go to Houston, but my plan is we're not going anymore. Houston जाना चाहिए आपको, गर्मी होगी because my son is still sick, so we're kind of just debating. Well, like now the flights are really expensive too. It's like $600. I just checked. If I go, कभी नहीं travel करता in holidays पे, कभी नहीं करता. yeah. Well, we have to go because we have to go to a wedding basically. Oh, yeah. Maybe I'll just go for a couple days. Maybe I'll just go by myself. Maybe. So yeah, that's what it is. Like his doctor said it's advised not to travel with him right now. So basically we're not traveling. So, but inshallah, like next year we're gonna be traveling 2 or 3 places. I love traveling. So Have you guys been to Houston before? yeah, many times, 2 or 3 times. What Yeah. about you, Sunny? I've never been to Houston. I've been to Dallas and Austin, but I've never been to Houston. Houston is very close to my heart क्योंकि मैंने पढ़ाई वहीं से की थी, University of Houston downtown. It's like the most boring city. My friend is also from University of Houston. He loves it. Really? So many stories to share. Yeah. मजेदार था, मेरे लिए तो मजेदार था. Was there Agha Jew still there at the time when you were there? यार मैं उस जमाने में हिल क्रॉफ्ट पे हुआ करता था, देसी इलाके ज्यादातर. Yeah, that's where it is. Yeah. शेख चिल्ली, अली बाबा, ये सब. Isn't Agha Jews there too? उस वक्त तो शायद नहीं था. अब आ गया होगा. अच्छा. ये जो हमारा कौन है टीवी पे एक्टर आता है ना, साहिर लोधी. हाँ. ये ह्यूस्टन में रेडियो शो किया करते थे उस वक्त. Oh, अच्छा. He was very talented यार, very talented. He is still very talented. पता नहीं उन्होंने. So why doesn't he do it anymore? अब तो पाकिस्तान में टीवी चैनल्स पे आने लग गए ना. So why doesn't he do that one anymore? Like the one in Houston. He does radio shows in Karachi. But not in Houston. Not in Houston because obviously पाकिस्तान मूव हो गए ना, तो पाकिस्तान से करते हैं. पाकिस्तान के रेडियो पे आते हैं. उस वक्त ह्यूस्टन में रेडियो था, उस पे आते थे. अच्छा, gotcha. ठीक है. और बड़े फनी भी थे ये, बड़े मतलब उस वक्त भी टैलेंटेड थे. फिर ये कराची शिफ्ट हो गए, कराची में आके ये कर रहे हैं काम, लेकिन यहाँ उतना नहीं हो पाएगी जितना ये ह्यूस्टन में करते थे. जितना टैलेंट है ना इनका, इन्होंने इंसाफ नहीं किया उसके साथ. कमिंग बैक टू द इंसाफ, आई थिंक हमें अब दुनियापुर के साथ इंसाफ करना चाहिए जो 1-2 किस्तें गुजरी. जी सनी. Hanji. Yeah, coming back to Dunyapur. So, a lot has happened in the last 2 episodes. So Norris Adam, now that he's out of jail, he's back into action and he's up against the Nawabs. And he's got the what's the other clan? The Butcher clan. What is it called again? कसाईयों का कबीला. Kasai. Right. So he's teamed up with Kasais, and together they want to take down the Nawab, and their main target is Anna. And from what Sana was just telling us, that in this episode, Norz Adam comes to know through his spies that Shamir is involved with Anna in some way or the other. And Shamir, on the other hand, when he comes to know about this potential bloodshed, he wants to save Anna. So he goes to आशिकी माशूकी छाई हुई है लड़के को, ऐसे ही कहते हैं ना. लौंडे को आशिकी छाई हुई और यहाँ पे जंग चल रही है.
Yes. So his first approach was to go to Mir Hassan and ask the police to stop the bloodshed. But Mir Hassan is skeptical, right? Initially, he was skeptical, and he asked her, Shamir, why did you change your mind? Why are you against your father? So I think that was a good scene. Although I wish that Shamir performed better. But we have said this over and over, like, let's let's not go over it again. But anything you want to add about that scene? No, not really. I really liked Sami's performance in that scene. Like, the way he was skeptical and the way he said, okay, now that you've put the ball in my court, I will need a team. Because we have to go against Adam. So mere chote se force se nahi hoga. I need a team. And I think he gives him the idea of approaching Shamsher, right? अच्छा माजरत हाँ सनी सना No. I don't think so. I think he just asked for a team, and then that's what makes because Shamir asks him, "Who do you have in mind?" And then they go silent. So and then the next scene is like he approaches Shamsher, who's in captivity with an Adam. maybe. I have no idea. So then I'm like, does he? Okay, तो so अच्छा मैं थोड़ा माजरत ये करूंगा कि मैंने पहली वो वाली किस्त नहीं देखी थी. लास्ट मैंने देखी एपिसोड, जब ये वाली देखी तो मेरी प्रिटी मच मेरी सब समझ में आ गया. लेकिन मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि क्या शामिर को इस बात का पता नहीं है कि शमशेर ने ही उसके बड़े भाई को मारा है. He knows. Yeah, I mean, in this particular drama, everybody knows everything, but they are using each other for their own purposes. Because he goes to Shamir and says, "Okay, you're gonna help me," and then he says, I betrayed your father, but you're still coming to me. He's like, "Yeah, like I still need your help." And then he takes them, and then they actually get a force, and it was such a. I don't know if you remember that scene when he's sitting there and in the car with Shamir, and he has like a whole people, like gang of people in the cars behind him. Right. And then he's just he's like talking, he's like, "Oh yeah, kisi ladki ka mamla hai," this and that, like, "Oh, let's see ki kaisi ladki hai." And then Shamir just shoots him. Yeah, I was like, अच्छा what एक just मिनट, happened? शामिर ने मार दिया शमशीर को. No, मार yeah. दिया on a very trivial thing. And उसके Yeah, and I was like, it was such a ruthless moment. Yeah, I mean, Right? but I think it's the same thing that Faraz keeps mentioning now. They're trying to bring shock factor to the show, but uselessly. Like, this was another example of this. We see like 2 or 3 scenes of Shamir and Shamsher. There's so much dialogue exchange between Shamir and Shamsher. There was a waiting period where Shamir and Shamsher are waiting कि शमशेर की आदमी लोग आएंगे and they will go on this so they will go to support Anna basically together. So उसके ऊपर हमने काफी वक्त स्पेंड किया and then जब finally वो पूरा caravan निकला शमीर के साथ शमशेर के लोग आए and then Shamir and Shamsher together kind of started going towards Nawab's Haveli to basically face Adam. So Shamir, Shamsher and the SHO, they are now a single group protecting the Nawabs from the Adams. So uske liye wo nikle and the raste mein like Shamsher is asking ki, what was the reason कि तुम इसको नवाब के against जा रहे हो, you're the son, why are you going against, तो हो सकता है कोई लड़की का मामला है. He just said this and Shami shoots him. कमाल है यार, भाई को मारा तो खून नहीं खोला उसका. I know, right? Like the only thing he says कि ओए लड़की का मामला देखते हैं लड़की कैसी है, and that's it. That's it. And he shoots him. And I'm like, how does he shoot him on such a trivial, topic? Trivial matter, yeah. And then he's the leader of the gang who's supporting you, supposedly supporting you. How don't you think that they will go on a mutiny against you and not support you, kill you right there? Where was the strategy and why was this? Like, I mean, it was so like thoughtless, and so unintelligent, irrational, and then it was just like, and then it made him like more not human. Yes, I mean, मतलब पूरा पागल दिखा रहा है. Like उसकी कोई ना तो कोई strategy है, ना तो he's smart. पूरा thing, मतलब execution of the scene में कोई intelligence नहीं involved थी.
उसके जो मतलब शमशेर के जो लोग हैं वो लोग उतरे गाड़ी से एंड उसके सामने उसने शमशेर को And और he's like, 2 बार shoot them. शूट किया एंड बोला कि अच्छा देखो दिस इज व्हाट इज गोना हैपन टू यू इफ यू डोंट फॉलो मी और वो सारे लोग दे आर ऑल यू नो विद वेपन्स एंड ऑल उन लोगों को डर लग गया शमीर से No. He said, okay, if you want, you can shoot me, but this guy was talking too much, and that's why that's what I did what I did to him. But if you still want to follow me, sure, you can follow me or shoot me. So they just Exactly. follow him. So just follow him. But why would they follow him? Why wouldn't they follow Shamsher, who was supposedly their leader, and not talk about, you know, why would you do something like this to our leader? And then just follow Shamsher. It's like nobody has any loyalty to anybody. It was bizarre. Yeah. And then I यही was तो just, फ्लॉ है, लूज I did not like, it's a story then, right? It's not anything else. हाँ स्टोरी बन गई, सही कह रही हैं आप सना, ये ऐसा लग रहा है स्टोरी बन गई कि तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम ये करो, तुम वो करो, या अब ये हो गया अब ये कर लो, अब ये हो गया अब ये कर लो. तो अगर स्टोरी के हिसाब से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हो गया, फिर उसको उससे मोहब्बत हो गई, और मोहब्बत भी पता नहीं कैसी हुई कि बस मतलब मुझे कोई दोनों के बीच में कोई इंटेंसिटी और रोमांस दिख नहीं रहा है, तो मोहब्बत हो गई, अब ये अपने बाप के खिलाफ हो गई. ये स्टोरी चलती हुई आ रही है, डायरेक्शन कहीं नहीं दिख रही है. Yeah, there's no intelligence in the screenplay. It's just like, अच्छा हमें कोई shock factor डालना है, क्या करें? अच्छा इसको मार दो. You know, like it's like, But then there's no purpose of killing him. That's the point here. yeah, why At that point, because he needed him, right? He needed him. They could have shot him afterwards, after their victory. Right. And then अगर इसको मारना ही था, इसको तो हम 3 एपिसोड पहले ही मार देते यार. क्या जरूरत थी इस बंदे का? I don't understand. वापस आने का. वापस आया. Then he was with the dogs. इतने like footage हम इस बंदे पे दिए, only to die with this such a trivial thing. कुछ पता नहीं वापस आ जाए. है ना? एक बार तो आया है बच्चे. I mean, I don't understand the purpose of bringing him back and then killing him. Exactly. मतलब इसका क्या काम था? 2-3 एपिसोड पहले, unless the only purpose was that वो छोटा बंदा भाई वापस आ सके उसके excuse से. But you know what? So bizarre. You know, the Nawaz started walking all of a sudden. Oh God! ऐसा वैसा walk, like literally marching. यार देखे, अब मुझ पे ना वैसे भी इल्जाम लगा दिए लोगों ने कि मैं बहुत बॉलीवुड मूवीज के रेफरेंस देता हूँ, लेकिन यहाँ वो रेफरेंस बन रहा है. वो वेलकम मूवी में जो है ना, एक आदमी होता है शुरू से लेके एंड तक वो एक ही डायलॉग मारता रहता है, मेरी एक टांग लकड़ी की है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, उदय भाई को मेरी बात बुरी लगी, उन्होंने मेरी टांग तोड़ दी. शुरू से आखिर तक वो ये बोल रहा होता है, और एंड में जब गोलियां चल रही होती हैं तो वो लंगड़ा जो बना हुआ होता है वो भी भाग रहा होता है. तो इसकी जान पे बनी तो ये भी ठीक हो गया. Oh God, it was so. इसको फनी लेंगे, इसको सीरियसली इसको रोस्ट करे, इसको सीरियसली. नहीं, रोस्ट हो गया वो वही सीन बन गया पूरा का पूरा ना. शुरू से आखिर तक वो लंगड़े चला जा नहीं रहा, और एंड में गोली चली तो दर भागना शुरू हो गया. कहते भाई तू तो लंगड़ा था. नहीं, मैं लंगड़ा कहाँ था. Yeah, like, but the way he was walking, like, I know, I'm like, you were bed bound. Yeah, बेचारा Sana was thinking इसका hip fracture हुआ है. Hip fracture. No. I said spinal compression fracture. Okay. अच्छा, मजे की बात यह है कि ये ड्रामे की जो स्क्रीन प्ले है और जो एग्जीक्यूशन इतनी खराब कर दी है ना, स्टोरी फिर भी सही है कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर हमारे बीच मौजूद है, उसका सारा पढ़ा ज्ञान जो है वो वेस्ट हो रहा है. कौन पढ़ा लिखा डॉक्टर? आप जो सना जो है, सना को मेडिकल मुझे कह रहे हो. ओके, आपको कह रहा हूँ. तो आपका सारा पढ़ा ज्ञान, जितनी पढ़ाई की, वो सब ड्रेन हो गई है. दुनिया पूरे में जो कैरेक्टर्स देख रहे हैं कि वो उसको हिप फ्रैक्चर है, क्या फ्रैक्चर है, या इतना मुश्किल नाम आपने लिया, वो कुछ नहीं. वो जैसी सर पे पड़ी तो खड़ा होकर भाग चलना शुरू. I know. Exactly. And I don't know Shamir का background क्या है, वो कहाँ से पढ़ के आया है, God knows. But when he speaks English, he speaks English with an accent. Really? कौन सा accent? True. No, I didn't hear what American accent. I don't know what accent. It's like गाँव का English का accent तो नहीं था. No, and then he says engine seize हो गया है.
right? C's. And I'm like, where did you go to school? My question exactly. You went to U of M? इसकी characterization भी ठीक से नहीं UCLA? किया। हाँ। So, 30 crores have gone to drain, मतलब ऐसा जाया वैसा हो drain मतलब So royal Fawaz, would drain। you ever say that term C's? कि engine C's हो गया है? हाँ बोलते हैं, ये गाड़ी खराब होती है तो इंजन सीज हो गया, यही कहते हैं, यही टर्म है, गाड़ी खराब C's, like stop, not stop. हाँ बस वो but सीज मतलब इंजन सीज हो गया, मतलब गया इंजन, On the C's, I know the meaning of C's. नहीं I think गाड़ी it's खराब हो probably गई। a common usage in कॉमन in that यूसेज है, मतलब जब continent. ये टर्म Oh, because we don't use it that much, right? Like we don't use it. नहीं, ये actually. यहाँ मैकेनिक्स बोलते हैं और Really? वर्ड यूज, हाँ, और ये मैकेनिक भी बोलते हैं, उनको इंग्लिश ना भी आती हो फिर भी वो ये लफ्ज Oh, बोलेंगे, भाई क्या खराबी गाड़ी में, इंजन सीज हो गया, तो यूर लाइक अबे यार गए काम से, अब oh, पूरा I didn't know खुलेगा that because I'm like ओवर, C's is like. नहीं इंजन सीज, इंजन सीज कहते हैं वो, उसका मतलब है बस अब ओवरऑल होगा इंजन, पूरा पूरा खुलेगा, पूरे हर चीज इसके रिंग पिस्टन सब नए डलेंगे, तो I mean, yeah, I know the meaning of C's. It's लंबा खर्चा। It's the other C's, not the other. Like it's CEASE C's, not the SEICE. हाँ SEIZE, ये वो नहीं, वो नहीं है. It's the other with the C. सी वाला है। C's अच्छा है. भाई, अपने को नहीं पता, बस इंजन सीज पता है, इंजन सीज का मतलब ये है कि लंबा खर्चा, बस गई गाड़ी। Because the other C's means to like to grab something or get something or No, occupy. this is a stop wala C's. हाँ. बस खत्म, मतलब ये स्टॉप वाला हो या जो भी हो, जब ये कोई बोलेगा ना तो उसका मतलब है कि इंजन गया, अच्छा, खत्म, गाड़ी so नहीं it चल is सकती। used there. I did not know. I'm like, oh my gosh. हाँ But ये the thing is कि वो जो दो सीन थे, they were so useless scenes. उसमें ना तो chemistry दिखी, ना तो purpose दिखी, and the execution of the scene was like exactly जैसे मेरे बच्चे theater करते हैं ना, ये आया, वो गया, ये गया, like you know, no वही चल proper रहा है body ना। language. हाँ, The scenes were executed exactly that way. Okay, they just exchanged a few dialogues, then they both turned around and left the wings for the wings, and then again they met, to say the same thing over again. So No, but then she sat this time in his car, and then he dropped her off. yeah, and then the funny part is like there were two people there, right? There was the driver and then Anna. He only took Anna away, and the driver को छोड़ दिया. Was there a driver too? There was a driver I thought too, Anna was yeah. driving. पहले बोला ना कि तुम दोनों को यहाँ animals will just eat you alive if I leave you guys here. So there were two Oh. people. One was looking at the car engine and trying to figure things out, and Anna was there. But when he left, he only took Anna with him. He was doomed anyways. That's hilarious. Hilarious. मतलब dialogues के कोई मतलब नहीं है, like attention to detail तो largely missing है, like लोग ऐवे ही कर रहे हैं चीजें, so And then what else? Like yeah, and I was wondering, do they have their cell phones with them? Shahmeed and I Anna? didn't see any Okay. the usage of any. And then मुझे तो सबसे बड़ी problem होती है Norris Adam के acting से. The way he's portraying this character now. Okay, remember the sequence where him and Shamir are walking and so they're running some accounting. Which one? Oh yeah. Yes, I remember. He's saying that in a walking. coal mine, something, there's something, 10,000 यहाँ He's से like, 10 lakh. oh, aa jayega. Don't worry And he's about like, it. आ जाएगा. I mean, and then he's like, हाँ नवाबों को भी तो मार देंगे. So my question was, if नवाब को मारना इतना आसान था, तो इतने दिनों तक वो जिंदा क्यों रहा? Well, they were trying to kill his kids first, I guess. Because they were the next in line Nawab for did not put inheritance. up a single fight. Like, when Adam's troop came, Adam and Kasai's, Nawab didn't put up a single आप देखिए fight. स्टार्टिंग में, Nawab was starting में bedridden. He was bedbound. That's why. Nawab was bedbound, but he didn't have and Anna was like all talks and she didn't have any. All of our men have died. Yeah, and no strategy. And at the end of the day, it looked like they were super weak. They had no like force. Yeah, that's why Adam had Dunyapur before when this drama started too. Yes, and then स्टार्टिंग में था ना, जब वो कहता है नवाब, यही तो कहता है स्टार्टिंग में कि अगर नौरोज आदम चाहे तो अपने आदमियों के उसके ले सकता है, जब भी लेना चाहे ले सकता है. तभी वो निम्रा से शादी करता है कि ये हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है. Right. तो वो शायद
तो But इतना तभी सब करने की 50-50 जरूरत क्या थी? divide भी नहीं हुआ था दुनिया पर. Now apparently जी this 50-50 divide, yet they don't have enough force to counter Noruz Adam and the Qasais. No, because So, Adam said like, oh, everyone's gonna be with me regardless. so then they were not even a formidable enemy. No, I mean, Adam could have decimated them long ago. So what was the whole point of the story? मेरे को नहीं समझा. Because at the end, there was no force. There was no resistance from the Nawab as much. Oh, and then Adam knew that his brother was always betraying him. Yes. Is that his real brother? Well, yeah, I think it is. I think It it is. Yeah, the mom says, no. I just I just don't. I cannot imagine. Like, I don't know. And I just have now- a problem just thinking of them as brothers. I don't know why. And now the they don't brother's look it. daughter would be like the leader because Shamir has left, and so if Anna could be the leader, why not me? So she will become the leader. So And I then don't know. and then like Adam Noro says ke tumhare khoon mein gaddaari hai, and I'm like, yeah, like your brother did the same too. So apparently like it's on both sides. It's just not like because he says to his wife ke tumhare khoon mein gaddaari hai. That's why your daughter did this and now your son is doing this. Yeah. But then he didn't think of his own brother. Yeah. And then the funny part is like, when the SHO is supporting Shamir and Anna to leave Dunyapur. So he's like, okay, I'll take you guys. And uske pure piche, in my there is a truck. truck, and they're hiding in the truck. Apparently the truck is full of like household things. Why wouldn't he take his own wife and son? And you know why? Because he did not want Adam or Noro's Adam to think that he ran away. No, but that was what was told to Noraz Adam कि ये तो कब पहले ही चला गया था SHO. हाँ, ऐसे जो चला गया नहीं सर like तो then he says कैसे अपने बीवी और बच्चे को छोड़ के चला गया. Like so he actually became I think he left them because they did not want he did not want them to think we all ran away with Anna and Shamir. No, but then Noraz Adam का तो वही suspicion रहा कि बीवी और बच्चे को यहाँ छोड़ के वो अकेले क्यों गया. But because he's gonna come back now. Meet Hassan. हाँ, so that's why that even caused more suspicion कि वो अपना सामान लेके गया, खुद को लेके गया, लेकिन बीवी बच्चे को छोड़ के गया. But he's gonna come back and then take everyone. ये सीन थोड़ा सा खतरनाक था क्योंकि देखो बीवी बच्चों को लेके जाता तो थोड़ा सही स्टोरी लगती कि भाई चला गया शहर छोड़ के. Right, yeah. वो सामान भी ले गया, वो भी ले गया, बीवी बच्चे छोड़ गया. ये कोई मतलब ये आराम से पकड़ में आ सकता है. Yeah, exactly. और वो एक बार्गेनिंग चिप भी हो गई, ब्लैकमेल भी कर सकता है, हॉस्टेज भी कर सकता है उनको वो. It was like such a foolish और अभी strategy. और अभी जो कसाईयों का लड़का है, क्या नाम है उसका, जबरदस्त कसाई का बेटा, शाबाश कसाई वो आके बताएगा उसको कि ये लोग जो थे ना उसके घर पे थे, मीर हसन के घर पे छुपाया हुआ था उसने. तो बीवी बच्चे तो इधर ही हैं, तो बड़ा. But then Mir Hassan's probably gonna went back, right? Yeah. So he's gonna say like, oh, I don't know, I don't know anything about this. सामान लेकर गया क्यों तू? Yeah, because he's gonna eventually move. Because he said I'm gonna give my resignation. But ये थोड़ा सा मुझे वो लगा था कि क्यों. That's what I thought of. I mean, that was my thinking there. Yeah. जो सबसे बुरी चीज मुझे लगी है ना इस पूरे ड्रामे में, देखिए मैंने इस ड्रामे को बीच में एक आधी किस्त छोड़ दी थी और मैंने फिर लास्ट एपिसोड देखी इसकी. मुझे ना शामिर और ऐना इन दोनों के बीच में कोई रोमांस नहीं समझ आ रहा. I don't see any chemistry. हाँ, no chemistry, no romance. I mean, people are saying. I mean, I don't know. People are saying that there is chemistry, but I don't see it. नहीं, I don't see it as well. नहीं, मुझे भी नहीं दिख रही. I mean, they just talk to each other. Like I think people are just liking a boy and a girl talking. That's seriously, there was more chemistry between Shamir and his sister. But that is what brotherly insisted. I know that, but then there was chemistry, right? I mean, when I'm talking about chemistry, I think of like chemistry of different. Nimra has expressions on her face. Ramsha has no expression on her face, like हाँ, I don't know why. Like angry or perpetually. Like why does she not have expressions on her face? I don't understand. I don't know. Neither does Shami. Shami के भी ज़्यादा play of expressions नहीं हो रहे on his face. So this. I mean, there are more expressions on Mir Hassan's face. Yes, Mir Hassan. नहीं तो इस ड्रामे में
जी बोले. I just want to say Sami Khan is the only one जिसकी portrayal is natural. Like, given a नहीं, sequence, he will portray हाँ, that. पोर्ट्रेयल नेचुरल भी कह लो, और मेरे ख्याल से पूरे ड्रामे में सबसे अच्छी एक्टिंग भी समी खान ही कर रहे हैं. और Hands down. एक्सप्रेशंस देख लो, एक्टिंग देख लो, वॉइस वेरिएशंस देख लो, डायलॉग डिलीवरी Voice modulations. हाँ, मतलब मेरी नहीं समझ आ रहा बेचारे समी खान को वो क्रेडिट क्यों नहीं दिया गया आज तक जो वो डिजर्व करते हैं. सुपर स्टारडम की लीग, उसमें वो पता नहीं आ नहीं पाए. एक आधा ड्रामा उनका कोई टॉप पे गया है, No, काफी सारे हुए हैं. कौन से गए? पिया मन भाई. ऐसी है तन्हाई was really good. खुदगर्ज was really good. वो वाला था जिसमें वो जुदाई की कॉपी जो था. जुदाई, I don't know जुदाई. नहीं, ऐसे ही है तन्हाई. हाँ, नहीं, ऐसी है तन्हाई was that Nadia Khan and Sonia Khan. Yeah, Sonia Hussain. And then I loved खुदगर्ज. Okay. Yeah, and then there were a lot actually. I've actually watched a lot of his dramas. मतलब ये, लेकिन ये हुमायूं सईद, वहाज, I don't like हुमायूं सईद इतना. मैं एक लीग की बात कर रहा हूँ ना, कि फवाद खान, फैसल कुरैशी, इनकी इस लीग में नहीं आ पाए. ये है. I mean, किस्मत भी होती है. हाँ, किस्मत कह लो. I mean, you will only get how much Allah has destined for you, not a penny more, not a penny ये less. सही कहा आपने. ये बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक्टर बहुत अच्छे हैं. पूरे ड्रामे में जान इन्हीं की वजह से लगता है कि है. ड्रामे में एक्टिंग इन्हीं की अच्छी करी है. एंड दैट्स क्वाइट सरप्राइजिंग दैट इन अ ड्रामा वे यू हैव नुमान एजाज. अब नुमान एजाज का देखें फ्लैशबैक दिखाया तो वो ही सिटिंग एंड ही ब्रिंग्स हिज बूट्स. तो मतलब वो सिर्फ कुछ समझ में मतलब ना मिसिंग है. वही बात की जो सनी ने स्टार्टिंग में कही, मिसिंग यही है इस ड्रामे का, कि लोग आते हैं, अपने डायलॉग बोलते हैं और निकल लेते हैं. आए, डायलॉग दिया, चले गए, फिर दूसरा आया, डायलॉग दिया, चले गए. तो इस तरह से हो रहा है. नुमान एजाज का पूरा फ्लैशबैक था. इसी चीज की बेसिस के ऊपर ही ये इतनी बड़ी फाइट शुरू हुई ना, कि नौरोज आदम जो है वो बागी हो गया नवाबों से, क्योंकि उसकी वालदा के साथ गलत हरकत की थी नवाब ने. तो अब इस पूरे सीक्वेंस को विद इन 20 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स उन्होंने रैप अप किया और चैप्टर क्लोज और कहानी खत्म. जबकि ये पिछले सारे किस्तों में ये कहते आ रहे थे कि तुम्हें नहीं पता उसने क्या किया. बिल्डअप इतना स्ट्रांग था. तो ये शायद वही हम जो जिक्र बहुत पहले हमने कहा था कि जो है ना, ये साइकिल का इंजन ठीक करने वाले मैकेनिक थे, इनको जहाज का इंजन दे दिया ठीक करने के लिए. तो इस वजह से इतने बड़े स्केल का ड्रामा जो है इनसे चला नहीं पा रहे. बस ये प्रॉब्लम हुई है थोड़ी सी. I mean, don't you think it's has anything to do with the writer? I mean, the writer is the one who writes the story. He's the one who brings in the character. Story तो देखो सीधी सी है. So I mean, so if Shamir is gonna come back and then die again, that's from the writer then, right? Shamsher, right? Shamsher, yes. शमशेर, हाँ. नहीं, हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप. ये जो आग के दोबारा मर गया, क्यों मर गया, क्या किया उसने आके, like the scene, like the scene that was kind of like redundant scenes. Those are from the writer, correct? I think so. Yeah, you're right. Or would that have anything to do with the director too? I don't know. तो दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं. डायरेक्टर और राइटर दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं. Director had the call, right? कि like, why am I putting? I mean, you can do editing. Like that's the editor's. You can do editing. You can do editing if you've shot the scene. But the director is supervising it all, right? Because he's the one telling the story. So if the director को ही सवाल करनी चाहिए कि मैं ये दो सीन क्यों डाल रही हूँ, जिसमें एक बार शमीर और आना बात करते हैं, फिर गाड़ी लेके चले जाते हैं, फिर गाड़ी ब्रेक डाउन होता है, तो वापस शमीर और आना बात करते हैं. And the fact that Anna sat in his car has no major significance in the story. ऐसा नहीं कि गाड़ी में बैठ के भाग गए तभी के तभी. ऐसा नहीं कि वो गाड़ी में बैठे तो किसी ने देख लिया उनको. Like there was no significance to that गाड़ी में बैठना. Like they could have edited that scene out. Everything. Yes, the punches are not there. Like Faraz said, like the big thing जिसके ऊपर ये story premise, जिसके ऊपर story based है, that was told in like a flat tone in 20 seconds. With some, with silhouettes of people. Oh, and the scene between Shamir and there's so many Shah. I get so confused. Shamir and Anna, the scene in her bedroom.
Yes. right? And she's like, I don't know, it was lacking. Absolutely. Even like the scene in the when they're escaping and they're in the back of the caravan or whatever, the truck. वहाँ पर भी they tried to show like some romance in scene there. That was also so flat. I'm thinking about Iqtidar. I don't even want to go there. Like that's what I said. There's so much more chemistry there. I have my reservation there as well, but No, that's but what no, I'm saying. they have आजकल लग रहा है 100 कि times लड़का more और chemistry. लड़की What ने are you बात talking कर about? लिया. Yeah. No. Sunny, there's 100 times more chemistry there. I mean, But anyways, I did not yeah. feel. I mean, yeah, Iqtidar is another topic. We No, can it's take good. it. We can Okay. take it on. Stop. No. Okay, so back to Dunyapur. Okay. Rating to You know, you know what? Oh no, I do want to talk about that one scene when Mir Hassan is standing with his crew Yes. behind him, like, and he's like, they will stand with me till their last breath. Yeah, the government employee. They're gonna stand with me till my last breath, and they just start walking away. Like, I think that one dialogue was like a really good one where he's Anand says that तुम्हारा भरम रख जाता तो अच्छा. yes. I mean, he knows Dunyapur by now. Like, why would he make a claim like that, right? Yes, and like, oh god, and then That he was just hilarious. leaves, like, वहाँ पे like they have taken over now Nawab's house, and he just comes back home and sits with his wife and starts having dinner. Oh man. Oh god, it's so hilarious, I tell you. Like, I don't know. I mean, I don't even want to rate the drama today. Like, there's nothing impressive going on. No, I'll rate it. Okay. I mean, I'll give it a 6.5. Oh really? Wow. Just for the laughs. And it was, and Samir Khan's good acting, and it wasn't like it's still an enjoyable watch for some reason. Is it? Okay. In my mind, I'm यार still enjoyable thinking. नहीं है, हम लोग invested हो गए ना अब इसके अंदर, हम शुरू से No, देख I रहे don't हैं think इसको, तो so. I mean, so फिर मैं okay, तो इसलिए that's देख रहा हूँ कि फॉर द हैक ऑफ इट, कि चलो बस अब देख लिया है, शुरू किया तो खत्म भी करना ही है. होता है ना कभी आपको ऐसी मूवी या ऐसी चीज well, स्टार्ट कर देते हैं तो आप ये सोचते वाली 2 episodes मैंने इसलिए देखी because you asked me, you told me, oh my gosh, इतना बहुत कुछ हुआ है, Sana, you have to watch. हैं. हमने तो फरार के लिए कहा था आपको, हमने इसके लिए नहीं No, कहा. no. हमने कब कहा दुनियापुर के लिए? हुआ तो बहुत कुछ है, but जिस तरह से हुआ उसका कोई मतलब नहीं था. लाइक नहीं भी मतलब ये कि अगर हम 2 किस्तें भी देख लें इसकी और 2 किस्तों के बाद रिव्यू करें तो ठीक है. मतलब ऐसा है कि हम कर सकते हैं, अनलेस समथिंग हैपेंस के कुछ. अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को और थोड़ा सा ना बताऊंगा कि आप लोग तो देखिएगा, सोचिएगा इस बारे में भी, और जो सुन रहे वो भी, कि आजकल ना जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जिस तरह के ड्रामे बन रहे हैं इसमें ना लोग एक तो ड्रामा बनाते भी हैं और साथ में सोच रहे होते हैं कि कोई वायरलिटी वाला कंटेंट भी क्रिएट कर दें, जो कि रील्स पे और जो कि स्टेटस पे लोग डाल सके, ताकि जो है ना एकदम से जो है ना लोग आए, हुक हो जाए या आ जाए हमारे. मतलब दिस होल सोशल मीडिया हैज टेकन एवरीथिंग बाय स्टॉर्म. मूवीज भी इसी बेसिस पे बन रही हैं. एक होता है ना कि फ्रेम्स बन रहे हैं, वो भी इस बेसिस के ऊपर बनाए जाते हैं कि भाई ये वायरल हो जाए. बल्कि एक मैंने इसका अली रजा का देखा भी था क्लिप, वो ये कह रहा था इक्तदार के अंदर वो कहता है कि उसने एक थप्पड़ मारने वाला सीन किया था उसको, लड़की को, जो अनमोल बलोच है. तो वो सना कैन शेड मोर लाइट ऑन इट कि दैट सीन वाज देयर. बट वो कहते हैं उससे किसी ने पूछा ये सीन जरूरी नहीं था, तो कहता हाँ जरूरी नहीं था, लेकिन ये हमने इसलिए डाला कि सोशल मीडिया पे इसका फीडबैक आएगा, अच्छा वायरल होगा और लोग फिर कहेंगे अच्छा क्या है देखने, आज ड्रामा देखें. तो इस वजह से भी बहुत सी चीजें मुझे लगता है No, इस ड्रामे में भी there hasn't been a slap scene until now. वो बिस्तर पे फेंकता, हाथ पकड़ता हुआ जाता और वो वाला, बिस्तर, हाँ. yeah. मतलब मेरी मेमोरी साथ नहीं दे रही मैंने, क्योंकि मैंने ड्रामा नहीं देखा, लेकिन इसी तरह का कोई सीन था कि वो बिस्तर पे फेंकता है. तो दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड, द इंटरव्यूअर्स आस्क्ड हिम एंड ही सेज कि हमने डाला ही इसलिए था कि लोग देखें और बस ताकि वायरलिटी हो और कंटेंट इस तरह का बने. तो I mean, I never watch a drama based on that. At least not me. यार जेन जी जो है ना आजकल, इसको they have their own mind, their attention span is very less, and they
मुझे ऐसा लगता है जेनजी ने ना ये स्टारडम खत्म कर दिया है सबका। जितने बड़े बड़े एक्टर थे, जितने बड़े वो तो बड़े अच्छा स्टार्स किया. थे, That was good. अच्छा That's किया, good. अच्छा Yeah. किया. They have a voice now, so they turn back to the Yeah, of stars and course. tell Yeah. them that you guys are not super anymore. So Yeah, मतलब yeah. आपको तो ये भी है, तो इस वजह से भी वो उनको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि जेनजी तो ज़्यादा कोरियन ड्रामों पे चली गई. Yeah, and Korean dramas are really excellent. Like मुझे भी लगता है stories से कोरियन लेके ड्रामों पे जाना execution से पड़ेगा. लेके. I mean, if you love dramas, you should watch Korean dramas. अच्छा, I mean, ड्रामा absurdities है पाकिस्तानी से बहुत. ड्रामा कोरियन तक का सफर. हाँ, like I have watched all of them, right? So far, I absolutely think Korean आप लोग drama. ठीक है, आपका ड्रामा लॉग है, आप उसमें कोरियन के बारे में बात कर सकते हैं. मैं घूम फिर के ड्रामा पाकिस्तानी पे अटका हूँ. No, Pakistani drama is good. I mean, some हाँ. of them are really excellent. Yeah. Like we are watching Karze Jaan. नहीं है, बिल्कुल You है. know that's why है, we बिल्कुल है. did not want Pakistani in there. We said we're gonna make a drama lot because we might do Korean, we might do Turkish, we might do Wow. American or whatever. Like so you have a range basically. So you can do. नाइस. Right. Mm-hmm. अच्छा है. Yep. That Okay, was so फिर फराद, तो आपकी रेटिंग क्या होगी? 5 दूंगा मैं इसको. 5 है बस मेरी तरफ से. चलो ना good. अच्छा है ना बुरा है, बस ठीक है. ओके, ना अच्छा है ना बुरा. Okay, अच्छा. so हाँ, with that we can wrap up today's episode. This was a review on Dunyapur, and I think we are almost coming to the end of Dunyapur, right? सनी थोड़ी देर के लिए भूल गई कि कौन सा ड्रामे का review था. This is a We review. talked about so many different dramas as well. सनी पकड़ लिया, सनी पकड़ लिए. no. I did not catch her. Anyway, हाँ, wrap up करें यार, wrap up करें. No. Yeah. So we'll continue watching Dunyapur. I think we have only a few more episodes left, and then hopefully it will pick up, and the makers will sort of come and give it a good closure. But we'll see you all again next time with another new review of another show. Till then, bye bye from me. All right. Allah Hafiz, everyone. Bye everyone.